So in the last lecture we have discussed about what is binary fission, but today we'll see that there are types of binary fission. Types of binary fission. Binary fission means when the parent cell divides into two daughter cells, and that is called the binary fission. Now, on the basis of the plane of the division, कि division किस direction में हो रहा है, whether it is longitudinal, whether it is irregular, whether it is transverse, it's of three types. The first type of the binary fission is irregular type. Irregular binary fission. Second type is longitudinal binary fission, and third one is transverse binary fission. As the name indicates, the irregular binary fission means when there is no specific plane of division, it occurs irregularly, randomly. For example, there is an organism called the amoeba. Amoeba is an irregular structure like this. ठीक है? So this can be divided in this direction, this direction, this direction, this direction. There is no specific plane of division. That means plane of division is irregular. So irregular type of division in which that type of division in which the plane of division of cytoplasm is variable, but is always at right angle to the elongated dividing nucleus. ठीक है? तो इसमें plane of division is variable, perpendicular to dividing nucleus. जो उसका न्यूक्लियस होगा उस पे परपेंडिकुलर पर डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है. इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो एमीबा की. एमीबा इज एन organism which shows the irregular type of binary fission. Next type of fission is a longitudinal binary fission. As the name indicates, it occurs in some flagellates like Euglena. The cytoplasm splits lengthwise, forming two similar daughter cells. For example, this is Euglena. This is Euglena. It's a biflagellate structure. It's having a nucleus. ठीक है? First it will start dividing from top to bottom. Finally, two will be formed and two Euglena will be formed. इस तरह से. ठीक है? The plane of division is longitudinal from top to bottom. This is called the longitudinal type of division. And next type of division is the transverse type of division. It occurs in paramecium. It occurs in transverse, like sleeper animalcule जिसको आप कहते हैं, उसमें ये टाइप ऑफ डिवीजन होता है. ये है स्लीपर एनिमल्क्यूल. इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, वो हम देखेंगे बाद में. इसमें प्लेन ऑफ डिवीजन ये होता है, ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ डिवीजन. इस तरह से पहले दो बन जाते हैं, बाद में उनमें दो यूग्लुना निकल जाते हैं इस तरह से. ठीक है? दिस इज द ट्रांसवर्स टाइप ऑफ द division. These are the different types of binary fission. Now the next type of asexual reproduction is rather method is the budding. It's another method of budding is the another method of asexual reproduction. What happens in the budding? Only on the parent body there occurs the formation of small structures called the buds. ठीक है? जो पेरेंट बॉडी होती है उसकी बॉडी पे स्मॉल आउटग्रोथ निकल जाती है जिनको हम बर्ड्स कहते हैं. जब उन बर्ड्स का साइज इतना हो जाता है वो गिर जाते हैं और वही बर्ड्स फिर नए इंडिविजुअल्स तैयार कर लेते हैं. दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ डॉटर एंजियोस्पर्म फ्रॉम स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड द बड अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी. ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ a daughter individual from a small projection called bud on the parent body.
which after detachment from parent, after detachment from parent, rather after detachment from parent. जब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. Hydra is the best example था for this. Hydra belongs to phylum Coelenterata. इसमें इस तरह से यहाँ पर तो इस पे छोटा सा बड़ बन जाता है, ठीक है. तो ये बड़ आगे बढ़ता जाता है, ठीक है. तो इस पे भी छोटे छोटे टेंटेकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. फाइनली ये बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा ही बन जाता है, ठीक है. फिर ये कट जाएगा और ये बड़ गिर के नया इंडिविजुअल तैयार करेगा. दिस इज द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, ठीक है. सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट, दैट इज binary fission, then multiple fission, then budding. Now in the next lesson we will see the next type of asexual reproduction, which is the fragmentation, in which the parent body gets fragmented into different segments and each segment develops into a new individual. ठीक है, thank you.